Today we are going to start a very new poem. We have already, according to our syllabus, we have done some portion of letter to the editor. We have practiced some questions. Then in the letters, that is complaint letters, again I had practiced 4 different kinds of letters, right? And now we will be proceeding towards our literature, which we had been keeping aside for some time. The chapter is, the poem is A Tiger in the Zoo. Very small poem written by Leslie Norris. And this poem basically what it deals with is that what we do, हम लोग क्या करते हैं, कहाँ टाइगर को कहाँ रहना चाहिए. बेसिकली अगर आप लोगों को आज मैं जंगल में छोड़ दूं, योर पेरेंट्स से कि ठीक है तुम लोग जाओ जंगल में रहो, तो व्हाट विल हैपन. हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है, दैट इज ह्यूमंस लिव इन दी होम्स. Yes, we do have pets, domesticated animals, but on the other hand, the wild beasts like tigers or the mammoths like elephants, should not they be in their natural instincts, in their natural habitat? लेकिन हम करते क्या है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, बिकॉज ह्यूमंस फील दैट वी कैन ओवरपावर एनीथिंग. हम किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वी confine these animals in the zoo. हम इन जानवरों को जू में बांध देते बिना ये सोचे समझे कि whether they would be happy, whether they would be able to adjust. Whenever I take this poem, whenever, I have one very personal memory attached to the tigers. Very personal. And this has always given me this question कि क्यों हम करते हैं. Now what happened is, long back, it's very very long back, and I don't know, I may have even shared with you this incident. So since I was taking class in the very initial period of my career, I started with 6th, 7th, 8th को मैं लेती थी, and being my students very close to me, which I really feel proud. So I was always one who accompanied my students to every place where they went for the picnic or anything. So once we got an opportunity to go to Chandigarh. And in Chandigarh, that was the first time I came to know that there is a small zoo in Zirakpur, and हम लोग वहाँ पर गए. Now जो हमारी इंचार्ज थी, she told me she belonged to the same place, so she told me that there the tigers live in their natural habitat, and we humans have to travel in a closed vehicle, just like a cage, बिल्कुल केज के जैसा अगर हमें उसे देखना है तो. एंड इट वॉज रियली समथिंग, हमारे मेरे लिए तो बहुत नहीं थी. मैं वैसे टाइगर्स, अगर मैं जानवरों को बहुत पसंद नहीं करती हूँ, बहुत क्या बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, बट एनी वेज आई वॉज विद माई स्टूडेंट्स, तो हम लोग पहुँचे, एंड दैट्स अ वेरी बिग जू इन दैट वे. आफ्टर लुकिंग फॉर सम, मतलब कि हम लोगों ने क्रोकोडाइल वगैरह देखा, कोबरा था वहाँ पर, एंड देन वी एंटर्ड इनटू दैट एरिया जहाँ टाइगर्स होते हैं. वी वर इन अ वेरी स्मॉल बस विच वॉज कम्प्लीटली केज्ड, बिल्कुल जैसे केजेस में वो लोहे लगे होते हैं सलाखें वैसे. एंड वी वर ऑल्सो टोल्ड दैट वी शुड यूज अवर कैमरा वेरी, मतलब बहुत अलर्टली, कहीं से कोई भी, मतलब कि देयर शुड नो अटैक. And we were told not to stand out of our seat. We entered, तो गवर्नमेंट की व्हीकल है, तो हम लोग गए. That was the first time in my life I saw a pack of tigers
मतलब छोटे छोटे टाइगर्स थे, एंड पहले आगे दो बड़े टाइगर्स, फिर छोटे टाइगर्स, फिर पीछे. दैट वाज रियली अ रिमार्केबल सीनरी आई हैड नेवर सीन इन माय लाइफ. Then at one place I saw two tigers fighting with each other. I captured it in the camera also, and that was something I could really see. मैंने मतलब उनको देखा कि बिल्कुल open environment. Then that was, a memory for me. And my husband is very fond of tigers, elephants, and all kinds of animals. उनको तो हम भी animals ही लग जाए. So now what happened is, नेक्स्ट वीक ओनली हम हमारे उस जमाने में हम लोग बड़े अच्छा वो होता था, हम लोग सैटरडे संडेज को निकल जाते थे चंडीगढ़. हाँ, चंडीगढ़ वॉज आवर सेकेंड होम. मम्मी कहती थी तुम्हारा चंडीगढ़ जो है ना लोगों का मायका होता है, तुम्हारा वो दैट्स योर सेकेंड प्लेस. वी वेंट twice, thrice we have gone and we have seen the same scenario. Now this scenario went. Now it was 2012. So 2012 में my sister's son Aditya Adi, he is very fond of animals. तो ही मतलब उसको बहुत शौक है, तो हम उसको लेकर गए अपने साथ कि चलो उसको भी एनिमल सिखाते हैं. दैट वॉज वेयर द टर्निंग पॉइंट केम. जब हम वहां पर गए, आफ्टर द फॉर्मेलिटीज बाकी सब कुछ सेम था. when we were entering, in fact near the gate only, हमने देखा कि there was a बहुत पतला सा, just like a dog, एक एनिमल था, और वो जो भैया थे वहां पर ही वॉज बीटिंग दैट एनिमल विद अ स्टिक. तो पहले तो मुझे लगा कि मे बी सम एनिमल. देन some people were shouting that see tiger, 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 and I was literally इतना पतला. Then when we sat inside, तो मैं तो बड़ी खुश थी कि वो पहले जैसे हम गए थे वैसा होगा. And literally the band told that उस पैक में से 3 जो मतलब कि थे they were dead. और ये जो बचे हुए थे they were malfeed, मतलब उनको खाना नहीं मिलता था. So they were starving and they had become so weak. और weak होने की वजह से they were irritating. Sometimes they would be even chasing the vehicles. That is where this poem comes. कि क्या हम अपने पर्पस के लिए ऐसे एनिमल्स के साथ में उनको मार दे, उनको जबरदस्ती जेल में बंद कर देते हैं. We should leave them in the open environment, an environment actually where they are supposed to be, in the nature. And जो इस पोएम के अंदर क्या है, a tiger is caged and it is pacing in its cage from here to there. वो अपने केज में इधर से उधर जो है बिना शोर मचाए बहुत आराम से इस जगह से, छोटा सा है तो ही इज पेसिंग डाउन. अब यहाँ पर द पोएट इज ड्रॉइंग अ पैरेललिज्म, मतलब वो एक इमेज क्रिएट कर रहा है कि एक्चुअल में इस वक्त में पोएम टाइगर को कहाँ होना चाहिए, इन द जंगल, नियर द जंगल, जहाँ पे छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, जहाँ लोग शेर या टाइगर की आवाज सुनकर, दहाड़ सुनकर भाग जाते हैं, जहाँ नदी होती है, जहाँ हिरन आते हैं. द प्लेस वेयर द डियर कम्स, द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड अ रिवर, एंड दिस टाइगर इज हाइडिंग बिहाइंड अ बुश. लेकिन हम उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के वी हैव कन्फाइंड इट इन अ कॉन्क्रीट सेल, where unfortunately he is holding his anger. वो अपना एंगर नहीं दिखा सकता है, वो बेबस है, he is completely helpless. He is not at all interested in the people who come there and watch it. जो लोग वहां टाइगर को देखने आते हैं वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है. He is completely disinterested. He is just gazing at the stars
He is hearing to the patrolling sounds and just yarning. Yarning मतलब longing कि मुझे यहाँ से कोई बाहर निकाल दो. So that is the poem which is bringing the contrast that a tiger in a zoo has lost its freedom, whereas actually the tiger should be in a natural habitat where the tiger is able to enjoy its freedom. It's able to live its life in its own way. This is NCRT. A tiger in a zoo is written in the personification because the word he has been used for tiger. So this is actually in personification with a feeling that has been given to the tiger. The poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from zoo to jungle and back again to the zoo. So now we are going to understand what does the poet wants to tell. One second. He stalks in his vivid stripes. Vivid matlab different color. Actually it is yellow and black. Various. Vivid matlab various. The few steps of his cage matlab he is pacing to and fro. वो इधर से उधर चल रहा है. The few steps of his cage matlab the cage is very small. On pads of velvet quiet. यहाँ पर pads of velvet quiet is for his paws, which is velvet, which is like velvet, and it is also that he was moving very quietly, बिना आवाज किए. Sneaking जैसे बोलते बिना आवाज किए. In his quiet rage. वो चुप है लेकिन अंदर से वो गुस्से में है. He should be. अब ये जो दो पैराग्राफ्स है, दिस इज अबाउट हिज नेचुरल हैबिटेट. मतलब एक्चुअल में उसको क्या करना चाहिए, दिस इज टेलिंग इट. He should be lurking in shadow, sliding through long grass. मतलब उसको तो चुपचाप घास, जो लंबे लंबे घास है, उसके पीछे छुपकर आराम करना चाहिए. किस जगह पर? नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. जहां पर पानी है एंड द डियर कम्स ओवर देयर. दैट इज हाउ दे अटैक देयर प्रे. वो अपने प्रे को, अपने शिकार को उसी तरीके से अटैक करते हैं. नॉर्मली दे जस्ट हाइड बिहाइंड दोज लॉन्ग ग्रास और द बुशेस. एंड जब वहां पर कहीं पर उनको जो है डियर, वहां पे हिरन आते हैं, तो दे जस्ट अटैक. तो एक्चुअल में अगर टाइगर को हमने खुला छोड़ा होता तो शायद वो जो है इट माइट बी हाइडिंग इन द बिहाइंड द बुशेस
and waiting for the prey to come over near the water area. He should be snarling around houses at the jungle's edge. मतलब snarling around houses मतलब जो villages होते हैं which are near the jungle edge, जंगल जहां खत्म होता तो वहां छोटे छोटे विलेज होते हैं, वहां पर वो घूम रहा होता है. Baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. वो अपने बड़े बड़े दांतों से, अपने क्लॉज से टेरराइज करता विलेज को. मतलब जब भी विलेजेस उसको देखते वो डर के भाग जाते. नॉर्मली व्हेन पीपल फाइंड द टाइगर्स roaming around near the villages, they would be screaming and they would be hiding, they would be terrorized. ये उसका रूटीन है. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. लेकिन अगर हम देखें तो ऑन द कंट्रास्ट ही इज नॉट इन हिज नेचुरल हैबिटेट. इन फैक्ट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. मतलब कि उसका जो केज है वो कॉन्क्रीट से बना है. इट इज स्ट्रॉन्ग. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. पेपर में ये अलग से भी आता है एंड बिहाइंड बार्स का भी आपको जो है इट इज यू आर आस्क्ड टू फाइंड द व्हाट यू कॉल एज पोएटिक डिवाइसेस. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स मतलब उसकी जितनी ताकत है इट हैज बीन कैप्चर्ड इन द केज. ही कैन नॉट शो हिज स्ट्रेंथ जैसे वो गांव में दिखाता है, जैसे वो जंगल में दिखाता है, कैप्चरिंग इट्स प्रे, टेरराइजिंग द विलेजर्स. ऐसा वो कुछ नहीं कर सकता. ही इज हेल्पलेस, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. वो सिर्फ अपने केज में इधर उधर घूम रहा है एंड ही हैज नो इंटरेस्ट इन लुकिंग एट द विजिटर्स. He hears the last voice at night, the patrolling cars. जब रात को एक बार जो वहाँ पे लोग होते हैं they just पेट्रोल मतलब गार्ड एक बार आते हैं तो जब गाड़ियों की आवाज होती है तो उसको सुनता है and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. and यहाँ पर जो stares with his brilliant है he hears the last voice at night, the patrolling cars. मतलब he is helpless and therefore he is looking at the stars. He is hearing to the sounds. He just wants to come out. But on the other hand, he is captured inside that cage. In other words, the poem is the helplessness of a tiger which has been captured which has been caged forcibly, which has not been allowed to live its natural life. So that's the poem about. In other words, we can say that the poet Leslie Norris here brings out the theme of the helplessness of a tiger. A tiger which is said to be a wild beast. Or wild beasts are better when they live in the forest, in their natural habitat. लेकिन हम क्या करते हैं for our own entertainment, for our own selfish purpose, we bring them. आपने देखा होगा many of the tigers, many of the animals are tamed for the circus also, like elephant, tigers, many of them are used.
And that is why now, according to the law, it is compulsory that when a filmmaker or anyone who is using an animal, they should not, they should try to use the animated form, और अगर वो यूज करते हैं तो दे शुड नॉट हार्म इट. अगर आपने कोई मूवी देखी होगी तो उसमें लिखा हुआ होता है कि इस मूवी के बनाने के दौरान किसी भी मतलब कि जो एनिमल है उसका यूज नहीं किया गया था. नाउ जो पीपल्स एथिकल मतलब वो पीटा, दे टेल दैट एनिमल शुड नॉट बी क्रूअली ट्रीटेड. बट फिर भी केज पे तो हम तब भी रखते हैं उनको. So the poet Leslie Norris is personifying the tiger's emotions. He is trying to bring out the helplessness of a tiger which has been caged for the visitors. The tiger doesn't have any interest in the people who come over there to visit it. On the other hand, he brings a contrast, a parallelism कि इस वक्त अगर वो खाली होता, if it would have been in the jungle, so he would have been waiting for its prey near the water hole, or it might be roaming, stalking around near the villages where the people would be fearing looking at it. On the other hand, complete contrast है कि उसका जो उतना गुस्सा, उसका वो जो उतना पावर है, it has been now kept inside a cage. So that's the entire poem. Now I'm discussing the poetic devices. The entire poem is written in personification because the tiger has been personified as a human. He use हुआ है he should be his करके. And then let us come to the rhyming scheme. तो rhyming scheme आपका है stripes A, cage B, quite C, rage again B. cage और rage एक जैसा है, similar है, तो A, B, C, B. The same is here also. Shadow A, grass B, hole C, grass and pass are similar, so B. So the rhyming scheme of the poem is A, B, C, B. In his vivid strips, the vowel I is repeated. The vowel I is repeated. So it comes as assonance. When the vowels are repeated in a sentence, जैसे इसके अंदर his vivid stripes में I is repeated, so it is assonance. Quiet rage. Quiet का मतलब होता है शांत, एंड rage का मतलब होता है गुस्सा. So ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं. So it is oxymoron or antithesis. Some people call it as oxymoron when two opposite words are together, and sometimes we also call it as antithesis. It is also
transferred epithet. हम इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट भी बोलते हैं. ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या होता है? व्हेन एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन टू गिव अ कंप्लीट सेंटेंस को एक अलग मीनिंग देने के लिए. On pads of velvet quiet in his quiet rage. मतलब कि quiet का मतलब है शांत, which is here adjective, rage is noun. उसने अपने गुस्से को दबा के रखा हुआ है. So यहाँ पर the poet wants to give the meaning that the tiger has been caged and he is feeling helpless. He is feeling helpless. So that is why it is also called as transferred epithet. ये आप लोग हमेशा याद रखना. Again, these two are assonance. If you see OU is repeated. Baring his white fangs, his claws. Again, I is repeated. So these two are assonance. Here, behind bars. If only these two words come behind bars, so B, that is a consonant, has been repeated. So it is here alliteration. His string behind bars. On pads of velvet quiet. Pads of velvet quiet is the poet has compared the paws of the tiger with velvet. Yeah, very good. An enjambment होता है when the lines of the poem steps to the next line. अगली लाइन पर पहुंच जाता है without using any comma, without using any full stop, without any kind of punctuation. जैसे अगर आप पहला वाला देखोगे, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. This is also enjambment. Then sliding through long grass near the water hole. The next line has been there without any full stop or comma. In the same manner, यहाँ पर, and in the same manner in the last, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So when any line in a poem jumps or steps to the next line without any
comma, normally it is very important that we use comma or some kind of punctuation marks. उसको हम लोग बोलते हैं enjambment. As on ends, I have also shared some of the poetic devices with you. These are some other, yeah, I have already told that in the very first one, that is the beginning of the poem, also we have enjambment. I don't have the space, I haven't marked it. He stalks in his vivid strides a few steps, it is also enjambment. Then long grass to the water hole is enjambment, houses to edge is the enjambment, and then in the last it is stares with his brilliant eyes at the brilliant stars jo hai, that is also enjambment. Now cage. केज का मतलब होता है, वी ऑल नो केज मतलब केज, मतलब यहाँ पर द केज हेयर इज द symbolism for the imprisonment that humans have given to the tigers. केज का लिटरेरी मीनिंग तो केज है, लेकिन यहाँ पर it has been said कि उसको जबरदस्ती forcibly he has been caged. Then there is one word which we call as strength behind bars. अब मैंने आपको बताया if only behind bars आता है तो it's very simple, B letter जो है that is repeated, that यानी कि alliteration. But if you have been given the entire way his strength behind bars, so then what will be the poetic device? So we call such poetic devices जिसमें हम एक छोटी सी चीज से एक बड़ी चीज को बताना चाहते हैं. एक छोटी सी चीज से हम किसी बड़े चीज को बताना चाहते हैं, उसको हम either we call it as synecdoche or metonymy. We either call it as synecdoche or metonymy. For example, आप मुझसे पूछते हो कि मैम what is the vehicle you are having? आपके पास कौन सी गाड़ी है? तो now instead of replying in a direct way, that I have a scooty, I have a bike, I say I have a two-wheeler. My friend came to my house in his four wheels. My friend came to my home in his four wheels. अब
कोई 4 व्हील पर तो नहीं चल के आएगा ना. नाउ द 4 wheels here is referring to car, a bigger one. एंड व्हील्स तो उसके 4 हिस्से हैं. सो व्हेन वी आर यूजिंग सच वर्ड्स, मतलब कि मेरे को अपने उंगलियों को, मतलब मेरे को अपने हाथों के लिए मैं अपनी उंगलियों को यूज कर रही हूँ. I have to say that I have pain in my hands and I say my fingers are dead. To represent my entire hand, I am using only fingers. That's called as synecdoche or metonymy. तो यहाँ पर the entire strength of the tiger has been said that it is behind bar, मतलब उसकी पूरे की पूरी उसकी जो शक्ति है उसको हमने बंद करके रखा हुआ है. So it's metonymy or synecdoche. So these are some of the poetic devices. The entire poem, I repeat, is written in personification because the word he has been repeated, he, his has been repeated. Then we have enjambment. The sentence is jumping to the next line without any punctuation mark. Then we also have the rhyming schemes like oxymoron, क्वाइट रेज, यानी कि क्वाइट का मतलब तो शांत और रेज का मतलब गुस्सा. अब दो ऑपोजिट चीज को साथ में जब हम लेकर आते हैं तो उसको हम ऑक्सीमोरन बोलते हैं. जैसे डे एंड नाइट. वी ऑल्सो कॉल इट एज एंटीथेसिस. नाउ पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड का मतलब होता है पैड, और क्वाइट यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है चुपचाप. एंड here it is written, it is referring to the pause, which is not making any noise. Noiselessly he is pacing from one end to another, so it is metaphor. His paws have been compared to the velvet, smoothness, softness. Then we have plump deer pass, where the P word is repeated, alliteration. Then behind bars, again alliteration. Quiet rage can also be called as transferred epithet. As I said, transferred epithet जो होता है, it means बिल्कुल मेटाफॉर जैसा लगेगा. मेटाफॉर में there is a comparison and transferred epithet में there is a change in the meaning of the entire sentence. तो transferred epithet भी आता है because if it comes in your MCQs and you may be given the choice between, मतलब बाकी तीन और oxymoron antithesis की जगह पे आपको transferred epithet दे दिया तो you have to mark on transferred epithet. Then we have assonance in he should be snarling around, जहाँ पर आपके OU sounds, the vowel sounds have been repeated. With his brilliant में आपका I has been repeated. So wherever we are having, जैसे locked in a concrete cell, again here also if you see, we can say that it is also assonance, क्योंकि locked में O, concrete में O, it has been repeated. कई बार बच्चे they say कि concrete and cell. Some teachers say it is also alliteration, but alliteration का जो right definition है वो है when the words are giving the same sounds. Concrete और cell में क और स आता है, so they are not giving the same sound. So we don't use it as alliteration. We don't use alliteration by looking at the words, but by pronouncing it. So that is why we don't use it as alliteration. Then you have the symbolism of cage, and the poem is written in the rhyming scheme of ABCB. If you see night A, cars B, ice C, and stars again B. So it's written in the rhyme scheme of ABCB.
So this is the poem, a very simple. It doesn't have any, in depth. जैसे कि next आपका जो poem balls है, it has brought in in depth meaning. Then you have the poem animals, that also has a philosophical meaning. But this poem is just a contrast of the humans who misuse their powers, who try to control those helpless. हाँ, टाइगर बहुत खूंखार होता है. It's very dangerous. It's a fierce animal. It's a wild beast. ये सब कुछ है. लेकिन हम उनको उनकी जगहों पर कहाँ छोड़ रहे हैं? हमने तो उनकी जगहों पर खाली कर, हम लोगों ने तो कब्जा कर लिया है. एंड देन हम कहते हैं कि वो हमें आके अटैक कर रहे हैं. हमने उनके जंगलों को खाली किया है. दे हैव नॉट कम टू आवर हाउसेस टू वेकेट अस. हमने उनके जंगलों को खत्म कर दिया. हमने उनके पानी की जगहों को खत्म कर दिया है. एंड वेयर दे वुड गो, एंड देन इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन, इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट, हम लोग उनको जो है बंद करके रखते हैं. So this poem is written from the point of view of a tiger, not from the point of view of a human. ये आप लोग हमेशा याद रखना, that the poet has written this from the point of view of a tiger, कि उसको कैसा महसूस हो रहा है. So this is the entire poem, A Tiger in the Zoo.